स्वागत है आप सभी का। हमारी खास पेशकश लगातार जारी है। 24 की चौसर बजट की बिसात। 24 की चौसर इसलिए क्योंकि 2024 में देश में आम चुनाव होने हैं और इस कार्यकाल का ये आखिरी पूर्ण बजट माना जा रहा है। लिहाजा उम्मीद इस तरह की कि कुछ लोक लुभावन घोषणाएं इस बजट में हो सकती हैं अलग अलग वर्गों के संदर्भ में। कुछ ही देर में संसद में आम बजट पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये बजट पेश करेंगी। लगातार 5वीं बार वो आम बजट पेश करने जा रही हैं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी बजट होगा, जैसा हम लगातार बता रहे हैं। मोदी कैबिनेट में इससे पहले बजट को अंतिम मंजूरी दी गई है। बजट से आम लोगों को राहत की उम्मीद है। सबसे महत्वपूर्ण जो मध्यम वर्ग है वो टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद कर रहा है, क्योंकि पिछले लगातार 8 साल से टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लिहाजा इस बार उम्मीद है कि क्या टैक्स स्लैब में बदलाव हो सकता है। अब से थोड़ी ही देर में लोकसभा से ये सीधी तस्वीरें हमें मिलने लगेंगी जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट पेश करेंगी। बजट भाषण होगा और उसमें क्या क्या एलोकेशंस होते हैं अलग अलग सेक्टर्स पर, यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2024 में देश के चुनाव तो होने हैं और साथ ही इस 2023 के संदर्भ में भी बहुत महत्वपूर्ण इसलिए कि 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और जाहिर सी बात है कि जब बजट पेश किया जाएगा तो इन चीजों को लेकर भी ध्यान होगा। सत्र की कार्रवाई शुरू हो गई है। लोकसभा स्पीकर को आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। Honorable Speaker, I present the budget for 2023-2024. This is the first budget in Amrit Kal. This budget hopes to build on the foundation laid in the previous budget and the blueprint drawn for India at 100. We envision a prosperous and inclusive India in which the fruits of development will reach all sections and citizens, especially our youth, women, farmers, OBCs, scheduled castes and scheduled tribes. In the 75th year of our independence, the world has recognized the Indian economy as a bright star. Our current year's economic growth is estimated to be at 7%. It is notable that this is the highest among all the major economies. This is in spite of the massive slowdown globally caused by COVID-19 and the war. The Indian economy is therefore on the right track, and despite a time of challenges, heading towards a bright future. Today, as Indians stand with their head held high and the world appreciates India's achievements and successes, we are sure that elders who had fought for India's independence will with joy bless us in our endeavors going forward as well. Our focus on wide-ranging reforms and sound policies implemented through Sabka Prayas, resulting in Jan Bhagidari. Our focus on wide-ranging reforms माना जा रहा है कि अर्थव्यवस्था की गति 7% तक रहेगी, जो कि वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में अपना अलग ही स्थान बना रही है। रूस यूक्रेन युद्ध, कोरोना महामारी, इन सब को दुनिया ने देखा है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था गति बनाए हुए है। Example, Aadhaar, CoWIN and UPI. COVID vaccination drive in unparalleled scale and speed. Proactive role in frontier areas such as achieving the climate-related goals, Mission Life and National Hydrogen Mission. During the COVID-19 pandemic, we ensured
that no one goes to bed hungry with a scheme to supply free food grains. कोई भी भूखे पेट सोने ना जाए। इस देश में हर व्यक्ति को 28 months. उसका अधिकार, उसका हक मिले। To ensure food and nutritional security, we are implementing from 1st January 2023. भारत की जो आज वैश्विक छवि है, वो उसकी कई उपलब्धियों के कारण है। All Antyodaya and priority households for the next आधार, 1 कोविड, year. यूपीआई, Under PM गरीब ये सब हमारी प्रगति की एक झलक है और हमारी उस प्रगति को और मजबूत करते हैं। The entire expenditure of about 2 lakh crore will be borne by the central government. In these times of global challenges, the G20 presidency gives us a unique opportunity to strengthen India's role in the world economic order. With the theme of Vasudhaiva Kutumbakam, we are steering an ambitious, people-centric agenda to address global challenges and to facilitate sustainable economic development. The government's efforts since 2014 have ensured for life and life of dignity. The per capita income has more than doubled to 1.97 lakh rupees. In these 9 years, the Indian economy has increased in size from being 10th to 5th largest in the world. We have significantly improved our position as well as a well-governed and innovative country with a conducive environment for business as reflected in several global indices. We have made a significant progress in many sustainable development goals. The economy has become a lot more formalized as reflected in the EPFO membership, more than doubling to 27 crore and rupees 7,400 crore digital payments of 126 lakh crore rupees through UPI in 2022. The efficient implementation of many schemes with universalization of targeted benefits has resulted in inclusive development. Some of the schemes are 11.7 crore household toilets under Swachh Bharat mission, which is achieved. 9.6 crore LPG connections under Ujjwala. 220 crore COVID vaccination of 102 crore persons. 47.8 crore PM Yojana and cash transfer of 2.2 lakh crores of rupees to 11.4 crore to over 11.4 crore farmers under PM Kisan Samman Nidhi. Our vision for the Amrit Kal includes technology-driven and knowledge-based economy with strong public finances and a robust financial sector. To achieve this, Jan Bhagidari through Sabka Saath Sabka Prayas is essential. The economic agenda for achieving this vision focuses on 3 things. First, facilitating ample opportunities for citizens, especially the youth, to fulfill their aspirations. Second, providing strong impetus to growth and job creation. And third, strengthening macroeconomic stability. To service these focus areas in our journey to India at 100, we believe that the following 4 opportunities can be transformative during Amrit Kal. Economic empowerment of women. Deen Dayal Antyodaya Yojana National Rural Livelihood Mission has achieved remarkable success by mobilizing rural women
into 81 lakh self-help groups. We will enable these groups to reach the next stage of economic empowerment through formation of large producer enterprises or collectives, with each having several thousand members and managed professionally. They will be helped with raw materials supply and for better design, quality, branding and marketing of their products. Through supporting these policies, they will be enabled to scale up their operations to serve the large consumer markets, as has been the case with the several startups growing into unicorns. PM Vishwakarma Kaushal Samman, PM Vikas. For centuries, traditional artisans and craftspeople who work with their hands using tools have brought renown for India. They are generally referred to as Vishwakarma. The art and the handicraft created by them represents the true spirit of Atmanirbhar Bharat. For the first time, a package of assistance for them has been conceptualized. The new scheme will enable them to improve the quality, scale, and reach of their products, integrating them with the MSME value chain. The components of this scheme will include not only financial support, but also access to advanced skill training, knowledge of modern digital techniques, and efficient green technologies, brand promotion, linkage with local and global markets, digital payments, and social security. This will greatly benefit the scheduled castes, scheduled tribes, OBCs, women, and people belonging to the weaker sections. Tourism. The country offers immense attraction for domestic as well as foreign tourists. There is a large potential to be tapped in tourism. The sector holds huge opportunities for jobs and entrepreneurship for youth in particular. Promotion of tourism will be taken up on mission mode with active participation of states, convergence of government programs, and public-private partnerships. Green growth. We are implementing many programs for green fuel, green energy, green farming, green mobility, green buildings, and green equipment, and policies for efficient use of energy across various economic sectors. These green growth efforts help in reducing carbon intensity of the economy and provides for large-scale green job opportunities. Priorities of this budget. The budget adopts the following 7 priorities. They complement each other and act as the Saptarishi guiding us through the Amritkal. Inclusive development, reaching the last mile, infrastructure and investment, unleashing the potential, green growth, youth power, and financial sector. I now speak on the priority number 1, inclusive development. The government's philosophy of Sabka Saath, Sabka Vikas has facilitated inclusive development covering in specific farmers, women, youth, OBCs, scheduled castes, scheduled tribes, Divyangjan, and economically weaker sections, and overall priority for the underprivileged. Vanchiton ko variyata. There has also been a sustained focus on Jammu Kashmir, Ladakh, and the Northeast. This budget builds on those efforts. Digital public infrastructure for agriculture. Digital public infrastructure for agriculture will be built as an open source, open standard, and interoperable public good. This will enable inclusive farmer-centric solutions through relevant information services for crop planning and health, improved access to farm inputs,
credit and insurance, help for crop estimation, market intelligence, and support for growth of agri-tech industry and startups. An agriculture accelerator fund. An agriculture accelerator fund will be set up to encourage agri-startups by young entrepreneurs in rural areas. The fund will aim at bringing innovative and affordable solutions for challenges faced by farmers. It will also bring in modern technologies to transform agricultural practices, increase productivity and profitability. To enhance the productivity of extra long staple cotton, we will adopt a cluster-based and value chain approach through public-private partnerships. This will mean बनाने की तरफ इस बजट का ध्यान है। We will adopt a cluster-based किसानों को इसके लिए वित्तीय संसाधन मुहैया कराए जाए, उसका जो खर्चा होगा उसे भी समावेशी रूप से हम उपलब्ध कराएंगे। Between farmers, state and industry for input supplies, extension services and market linkages. We will launch एग्रीकल्चरल एक्सेलरेटेड फंड का ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर रही हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा सके, तकनीक को बढ़ावा दिया जा सके, जिससे जो हमारे देश के किसान हैं उनके सामने जो मौजूदा समस्याएं हैं या चुनौतियां हैं उनका सामना वो आत्मविश्वास के साथ कर सके। India is at the forefront of popularizing millets, whose consumption ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए किया जाएगा। food security, किसानों को डिजिटल ट्रेनिंग देना, उनके खेती के लिए विशेष फंड देना। We are the largest producer ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कृषि उद्योग के लिए जिसका ऐलान निर्मला सीतारमण कर रही हैं। We grow several types of Shri Anna, such as Shri Anna Jawar, Shri Anna Ragi, Shri Anna Bajra, बेहतर बीज और बेहतर उपज इसको ध्यान में रखते हुए जो चीना एंड सामा मोटा अनाज है, मिलेट्स है, उस पर खास ध्यान। These have a number of health benefits. भारत चौथा ऐसा देश है जो मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए, व्यापक बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है। In contributing to the health of fellow citizens by growing these Shri Anna. मोटा अनाज इसको बढ़ावा देने के लिए खास तौर से आर्थिक मदद दी जा रही है, क्योंकि न सिर्फ ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा है बल्कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए भी काम आएगा। Best practices, research and technology रागी, बाजरा, रामदाना, मोटे अनाज का जिक्र कर रही है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। ये सारा मोटा अनाज जिसे हम सदियों से हिंदुस्तान में देखते आए हैं कि इनके अपने स्वास्थ्य के लाभ हैं, इन्हें खाने से जो स्वास्थ्य लाभ है उसका जीता जागता उदाहरण हिंदुस्तान है, भारत है। और छोटे किसान खास तौर से लोगों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए इस मोटे अनाज को उगाते हैं और देश तक पहुंचाते हैं। Improve value chain efficiencies and expand the market. For farmers, especially small and marginal farmers and other marginalized sections, the government is promoting इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ श्री अन्न, जिसका जिक्र निर्मला सीतारमण कर रही हैं, वो अपनी तकनीक और उस पर शोध देश भर से साझा करेगा, जिससे हम मोटे अनाज को, मिलेट्स को बढ़ावा देश के स्तर पर दे सके। Initiated computerization of 63,000 primary agricultural credit societies with an investment of 2,560 crores.
2,500 मछुआरों के लिए स्पेशल पैकेज का ऐलान किया गया है। 6,000 करोड़ का ये पैकेज। and the states model bylaws for PACS किसानों के लिए भी, खासकर छोटे PACS कमजोर किसानों के लिए सरकार is being prepared for countrywide mapping सहकारिता आधारित जो एक विकास का मॉडल है उसको प्रोत्साहन दे रही है। We will implement a plan to set up massive decentralized storage capacity. इसके लिए खास मंत्रालय बनाया गया जिससे सरकार से सीधे जुड़कर This will help सहकारिता उद्योग आगे बढ़ सके and realize remunerative prices through sale at appropriate times. The government will also facilitate setting up of a large number जो of कृषि क्रेडिट सोसाइटी है, यानी जो आपका किसान primary fishery societies अपने उद्योग अपने खेती के लिए पैसा उठाता है, उसे एक तरह से औपचारिक रूप देने की कोशिश ये सरकार कर रही है, उसे फॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रही है। Health, education and skilling. 157 new nursing colleges will be एक established. देशव्यापी मैपिंग की जाएगी किसानों को ये ऋण देने के लिए, एक किसान क्रेडिट पॉलिसी लाने के लिए। 7 medical colleges established since 2014. इससे किसानों को मदद मिलेगी अपने उत्पादों को देश भर में पहुंचाने के लिए। Eliminate sickle cell anemia by 2047. जिससे वो ठीक समय पर अपने उत्पादों को बेच सके। यूनिवर्सल स्क्रीनिंग ऑफ 7 करोड़ किसानों को डिजिटल ट्रेनिंग देने पर जोर रखती है ये सरकार। In affected tribal areas, और इस एक साल में, अगले एक साल में, इस आर्थिक साल में हम उन पंचायतों तक इसे पहुंचाने की कोशिश करेंगे जहां अभी तक ये लाभ नहीं मिल पाया। Facilities in select ICMR labs, Indian Council for Medical Research Labs, will be made available for research by public and private medical college faculty and private sector R&D 157 मेडिकल कॉलेजेस के साथ-साथ जो कि 2014 के बाद स्थापित किए गए, उनमें 240 नर्सिंग हाउसेस भी है जो कि स्थापित किए गए। ये सस्ते इलाज के लिए इस योजना का जिक्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर रही हैं। सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था को सुधार के लिए निर्मला सीतारमण ऐलान कर रही हैं। Dedicated multidisciplinary courses for medical devices will be supported in existing institutions. राज्य और केंद्र सरकारें मिलकर of skilled manpower इन रिसर्च लैब्स, हेल्थ लैब्स पर काम करेंगी medical technologies, high-end जिनमें पब्लिक, प्राइवेट and research. फैकल्टीज हों। Teachers training. Teachers training will be re-envisioned through innovative pedagogy, curriculum transfer. ICMR के जो विशेषज्ञों की साझा जानकारियां हैं उन्हें भी इसमें मिलाकर देखा जा सके। ICT implementation. दवाओं पर, खासकर फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में रिसर्च और तकनीक और इनोवेशन, Vibrant institutes of excellence उस पर काम किया जा रहा है। National Digital Library for Children and Adolescents. A National Digital Library for Children and Adolescents will be set up for facilitating availability of quality books across geographies, languages, genres, and levels, and device agnostic accessibility. States will be encouraged to set up physical libraries for them at panchayat and ward levels. राज्यों को प्रोत्साहन दिया जाएगा कि वो फिजिकल लाइब्रेरीज अपने यहाँ पर तैयार कर सके डिजिटल लाइब्रेरी रिसोर्स, और इसी के साथ साथ डिजिटल लाइब्रेरीज का ऐलान। डिजिटल लाइब्रेरीज जो कि अलग अलग राज्य अपने स्तर पर खड़ी कर सके। द नेशनल बुक ट्रस्ट, द चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट and other sources will be encouraged to provide and replenish non-curricular राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय का ऐलान कर रही हैं निर्मला सीतारमण, and in English to these physical libraries, जो कि प्रत्यक्ष पुस्तकालयों से अलग होगा, collaboration with NGOs फिजिकल लाइब्रेरी से अलग होगा। literacy
will also be a part of this initiative to inculcate financial literacy, financial sector regulators, इसके साथ साथ पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए खासकर कोरोना महामारी के समय age appropriate reading जो दिक्कतें आई to these उसके बाद पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए I move to priority 2, reaching the last mile. इन किताबों को अलग अलग राज्यों में मुहैया कराने के लिए और इनको डिजिटाइज माध्यम से भी मुहैया कराने के लिए इस डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना राष्ट्रीय स्तर पर की जा रही है। To provide a sharper focus to the objective of reaching the last mile, our government has formed the ministries of Ayush, इन डिजिटाइज लाइब्रेरीज को उम्र के हिसाब से अलग अलग कक्षाओं के हिसाब से पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए इन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे आने वाले समय में building on the success ये of the aspirational बड़ा districts program. शिक्षा स्रोत The बन सके। government has recently launched the aspirational blocks program covering 500 blocks for saturation of essential government services across multiple अंत्योदय domains यानी अंतिम such as छोर तक health, nutrition, हर व्यक्ति तक education, पंक्ति में खड़े agriculture, अंतिम व्यक्ति तक water पहुंचने की resources, सोच हमारे financial सरकार की inclusion, प्राथमिकता है। skill development and basic infrastructure. इसी वजह से माननीय स्पीकर सर, जल शक्ति और सहकारिता मंत्रालयों का गठन भी किया गया। which is primitive vulnerable tribal groups development mission is being launched to improve socio-economic conditions of the particularly vulnerable tribal groups, the PBTGs as we refer them to. Pradhan Mantri PBTG development mission will be launched. This will saturate PBTG families and habitations with basic facilities such as safe housing, clean drinking water, स्वास्थ्य, न्यूट्रिशन, कृषि, शिक्षा, improved access जल to संसाधन, education, health, वित्तीय nutrition, समावेशी road, सोच telecom connectivity और मूलभूत and sustainable livelihood ढांचे opportunities. को आगे बढ़ाने के लिए 15,000 ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं। available to implement the जो mission ट्राइबल ग्रुप्स in हैं, the next 3 years. वित्त मंत्री उन ट्राइबल ग्रुप्स का भी जिक्र कर रही हैं। The scheduled tribes. Eklavya model residential schools. जो ट्राइबल ग्रुप्स In the हैं, next 3 years, central कमजोर जो वर्ग हैं, उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए भी निर्मला सीतारमण ऐलान कर रही हैं। support staff for the 740 Eklavya model residential schools, which is serving 3.5 lakh tribal students. पानी का स्वच्छ पानी का स्रोत परिवारों तक पहुंच सके, शिक्षा तक उनकी पहुंच बनी रहे, उन्हें In the drought-prone सम्मान के साथ central regions of जीने का, Karnataka, आजीविका का अधिकार मिले। 5,300 crore will be given. 15,000 करोड़ आने वाले 3 साल में इसके लिए ये सरकार